Hey what's up guys, this is Ricky and welcome back to another video and आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ Motorola One Fusion Plus के बारे में। So let's get started। तो सबसे पहले तो बात करते हैं इस फोन के बिल्ड डिजाइन और स्क्रीन डिजाइन के बारे में। फ्रंट में हमें देखने को मिल जाती है ग्लास स्क्रीन, बैक इज प्लास्टिक विच इज अ रियली गुड थिंग। अगर आपका फोन वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है तो देयर इज नो पॉइंट हैविंग अ ग्लास बैक, दो इट गिव्स अ प्रीटी प्रीमियम लुक जो इस फोन में ऑलरेडी हमें देखने को मिल जाती है विद द प्लास्टिक बैक। ऑल्सो दिस फोन कैन सपोर्ट 2 सिम्स जिसमें हम दोनों में सिम्स डाल सकते हैं या फिर एक में सिम और एक में माइक्रो एसडी कार्ड डाल सकते हैं फॉर एक्सपेंडेबल स्टोरेज। So this phone has a 6.5 inch IPS LCD screen display with a screen resolution of 1080p. So basically हमें जो कलर्स होंगे इस फोन के काफी वाइब्रेंट और काफी क्लियर दिखेंगे, so that is a good thing. The pixel density of this phone is a little less, that is around 400 ppi, but that is also good for this price range. So overall the screen will look really nice. And I have used Motorola phones in the past and I believe कि इन phones का जो screen होता है वो काफी decent होता है for this price range at least. Also this phone has a completely full screen जो हमारे experience को काफी ज़्यादा better कर देती है। कोई हमें hole punch देखने को नहीं मिलता है, इसमें notch भी नहीं है, so that makes it really clean. And for the front camera of this phone, it has a pop-up camera which is a 16 megapixel shooter which will also give us pretty clean images and can shoot videos up to 1080p 30 fps. So next up we have the chipset and the software of this phone. So this phone has a Qualcomm Snapdragon 730G processor and supports an Android 10 software. And I know for a fact कि Motorola के जो software updates होते हैं for this price are pretty well and काफी देर तक आते हैं। And above all इस price range में Motorola is the only company that offers a pretty stock Android experience जो मुझे personally बहुत पसंद है। थोड़े upper range में जाएंगे तो we can see OnePlus does the same thing and also the Pixel in the highest range does the same thing. So talking about the GPU, this phone has an Adreno 618 जिस पर आपकी PUBG काफी smoothly चल सकती है, no issues in that. And जो प्रोसेसर भी है that is also pretty nice, so आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस होगा and डेली एक्सपीरियंस होगा वो काफी स्मूथ होगा। This phone comes with 6 gigs of RAM and 128 gigs of internal storage, that is also pretty decent. साथ में हमें देखने को मिल जाता है कि हम मेमोरी कार्ड इसमें डाल सकते हैं, so that's an add-on जिससे हमें बेटर स्टोरेज मिल सकती है if you want, so that is a pretty good thing. So now moving on to the camera. This phone has a quad camera setup just like any other phone in this range. It has a 64 megapixel normal camera, 8 megapixel ultra wide camera, 5 megapixel macro camera, 2 megapixel depth sensor. So according to me the camera setup of this phone is pretty decent. काफी ज़्यादा अच्छे punchy colors देखने को मिलते हैं। I have used Motorola phones in the past and I believe कि इनके cameras outperform any other phone in this range. Through its main camera it can shoot up to 4K videos at 30 fps and through the front camera it can shoot up to 1080p videos, 30 fps videos. So talking about the battery of this phone, हमें 5000 mAh बैटरी मिलती है and right out the box we can see 15 watt fast charger जो बहुत ही तेज आपके फोन को चार्ज कर देगा। And some other good features about this phone are that it has a water repellent coating, it has a 3.5 mm jack, thank God, and has a rear mounted fingerprint sensor. But it does not have stereo speakers, it just has a mono speaker, so that's a bad thing. But I guess at this price this is a normal thing, otherwise they won't be able to cut the price. So इस फोन का price is around 20,000 rupees जो हमें 17,000 को almost देखने को मिल जाता है on Flipkart. But overall I feel it is a really good phone at this price range. अगर मैं इसे Samsung के A31 से compare करूँ, which I reviewed earlier, it was not a really good phone. वो एक 22,000 का फोन था जिसमें हमें 90 Hz डिस्प्ले भी नहीं देखने को मिल रहा था एंड ना ही उसमें स्नैपड्रैगन की कोई डिसेंट चिप थी। इट हैड अ मीडियाटेक चिप व्हिच वाज नॉट दैट रियली गुड। सो आई फील कि अगर आप 22,000 का A31 कंसीडर कर रहे हो देन दिस इज a phone that you should really consider. Now I feel कि इस price range में एक Poco X2 भी है phone that you can consider. I also feel कि वो phone भी काफी ज़्यादा अच्छा है. It is slightly costlier than this phone, but it has a 120 Hz refresh rate, 1080p display. Also I feel इन दोनों का कैमरा भी बहुत ज़्यादा comparable है, so that's a really good thing. And almost all other things are same, but it has a 120 Hz refresh rate जो मेरे हिसाब से काफी ज़्यादा important चीज़ है आजकल के phones में and बहुत ज़्यादा smooth screen feel करती है if you have a better refresh rate. So let me know in the comment section below इन दोनों phones में से आप कौन सा phone prefer करोगे, Moto One Fusion Plus or the Poco X2. And just like that, this is it from my side guys. I hope you liked the video and if you did, be sure to smash that like button and also hit the subscribe button if you haven't already. And just like that, I'll see you in the next one.